हैप्पी फॉर दैट। बॉलिंग तो करते ही थे, लेकिन अब बैटिंग ऑर्डर भी और ऊपर आता गया। आप अपनी परफॉर्मेंस को लास्ट सीजन और इस सीजन के बीच में कैसे देखोगे? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट सीजन में लाइक उतनी अपॉर्चुनिटी आई नहीं थी बैटिंग से, और इस सीजन काफी अच्छा रहा क्योंकि थोड़ा ऊपर भी मिला बैटिंग, तो मतलब मैं अच्छा कर पाई तो अच्छा लग रहा है काफी। ये अवार्ड क्या मायने रखता है आपके लिए? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट सीजन में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई थी बैटिंग से, सो दैट बस यही है कि जितना अच्छा करती जाऊं, और ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है क्योंकि एक स्टेप आगे आई हूँ बैटिंग के लिए, सो काफी अच्छा लग रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऐसे ही खेलते रहिए, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। दीप्ति शर्मा, ऑफ कोर्स द रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर वो लोग वो पीछे वाले हैं ना, भट्टाचार्य, पर्दे के पीछे वाले लोग हैं ये सब। मिस्टर प्राशर जोशी and Mr. Pashchim Pathak. I would like to invite Mr. Ashish Shelar, Honorary Treasurer. I would request the team coach, Mr. Jonathan Batty, to collect the award on behalf of the whole team. I would not like to invite Mr. जीतने वाले को कम से कम 5 करोड़ देंगे, 5 करोड़ या 6 करोड़ देंगे। Runners up in Tata WPL Season 1 and in Season 2, the Delhi Capitals. It's been pretty hard fought, but it's the consistency. As a positive, we would definitely like to see from Meg Lanning, who collects her award from Mr. Roger Binney, President BCCI and Chairperson WPL, and Mr. Jay Shah, Honorary Secretary BCCI and Convener WPL. It hasn't been that very easy a road. I'm sure she's going to have few words of wisdom, few words of experience and valuable knowledge of India. Meg, yet again in the same scenario, same position, I would look at consistency as a positive, but your thoughts? Yeah, obviously disappointing not to get it done tonight. I feel like we've played some good cricket through the tournament, but finals are about playing well on the day, and congratulations to RCB. You outplayed us tonight and fully deserve the victory. So, yeah, definitely disappointed, but we can be proud of our efforts throughout. 64 without loss, and then it just went downhill.